तो भाई स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग अराइज की एक और नई वीडियो में। और भाई आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट के बारे में, लेकिन आज हम वल्कन के बारे में बात नहीं करेंगे भाई। कुछ तड़कते भड़कते नए लीक्स आए हैं, तो डेफिनेटली आप पूरा वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम चलते हैं आगे कि क्या है वो लीक्स भाई। तो भाई सबसे पहले तो भाई एक बड़ा वाला शाउट आउट नाटो और अल्फा लीकर के लिए भाई। तो उन दोनों के जो चैनल है, मतलब नाटो का यूट्यूब चैनल और अल्फा लीकर भाई का हमारा ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्स अकाउंट, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे जाके प्यार और सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि भाई उनकी वजह से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली यार जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वल्कन की जो स्टेज है उसमें हमें 3 स्टेजेस देखने मिलती है, सरब्रेस, फ्लोर 25 और मेन जो है वल्कन। लेकिन जो नया वाला आने वाला है उसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे In 4 the Vulcan, स्टेजेस। you have 3 main तो stages and 2 4 स्टेजेस blessings. कौन सी देखने This मिलेगी? time you have 4 main stages and 2 blessings. The 4 main stages are now you have Mitas, you have Isil, you have Kaisel, and you have Baran. तो देख सकते हो मेटस आएगा, फिर एसेल आएगी, रेडिरो फैमिली वाली, उसके बाद में काइजल आएगा, उसके बाद में भाई मेन बॉस बैरन है। और 2 ब्लेसिंग स्टेजेस रहने वाली है, वो सिमिलर ही है, वहाँ पे भी हमको 2 ब्लेसिंग स्टेजेस मिलती है। So yeah, मेटस की यहाँ पे स्टेज के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। of course I'm तो यहाँ पे talking पता है क्या हो रहा other है, यहाँ पे than ये देखो कुछ सर्कल टाइप के its बन रहे हैं normal और gameplay हमारा जिन्नू from भाग what we रहा है। already have in story. तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे मार मार के फोर्सफुली नहीं कर सकते हो इसको। दिस इज अदर देन नॉर्मल गेम प्ले। भाई भी हमारे बोल रहे हैं कि नॉर्मल गेम प्ले से कुछ अलग चीज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहने And वाला है। when it ओके pushes you away, it basically creates a circular mini-game area around himself, and the camera goes up down. ओके, तो हमको ये जब दूर फेंकेगा तो यहाँ पे मिनी गेम बोल रहे हैं, वो सर्कल वाला वो आ जाता है। ओके And then the player has to collect 4 or was it 5 circles, तो वो जो अलग अलग सर्कल्स दिख रहे थे वो हर सर्कल को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। magic circles, ओके before the charge ends तो इसका चार्ज एंड होने के पहले। ओके to finish the fight and basically break Metis. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि वल्कन के स्टेज हम करते तो वहाँ पे दीवार आ जाती है पत्थरों की, तो वल्कन रन करके आता है और उसमें वो टूटता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे ये सर्कल्स आएंगे तो हमको पूरे 4-5 जितने भी रहेंगे वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद में इसका जो ब्रेक है वो टूटेगा, मतलब इसका जो गॉज रहेगा जो भी रहेगा वो टूटेगा। और इसका एक चार्ज चलेगा, उस चार्ज के पहले ये हमको सभी कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको एजिलिटी चाहिए भाई, स्पीड मैटर करेगी, डैश मैटर करने वाले काफ़ी ज़्यादा। While you try to collect the magic circles, Metis slashes around himself to damage the player, which means you have to have a lot of dashes to dodge all of theirs while trying your best to actually collect all ओके, तो सेम चीज़ भाई भी यही बोल रहे हैं। the circles. This is the first stage. After that, when you lower his HP again, he does the mini game again, but this time instead of doing slashes around you when you try to collect the magic circles, he actually does a shockwave. If you don't ओके, तो फर्स्ट वाले में जब वो सर्कल्स आएंगे तो वो स्लैशेस मारेगा, लेकिन हम उसके एचपी कम करके जब सेकंड टाइम ये चीज़ करेगा तो इस बार वो शॉक वेव फेंकेगा, स्लैशेस नहीं मारेगा। ओके time your dodges perfectly, the shockwave will push you out of the minigame area and will do tons of damage to you, similar to Cerberus AoE, if you remember from the Workshop of Brilliant Okay. Light, where he does a tornado around himself. So this is basically the gimmick around Metis. It doesn't have anything special. The blessing area, the 2 blessing areas in this new extension are both pretty much the same. You have 5 stages of waves that you have to clear ओके, तो ब्लेसिंग स्टेजेस जो है वो सेम रहने वाली, वही सिमिलर 5 of the स्टेजेस रहने वाली है। skeletons. और It's स्केलेटन्स रहने वाले इस बार। ओके annoying, it's hard, it's not that horrible. I think most people will be able to clear it pretty easily. The gimmicks are a little bit hard to clear though, because they do a lot of damage, and if you don't time everything perfectly, you will die. टाइम का इशू आ सकता है गाइस। और यहाँ पे अब हम चल रहे हैं एसिल के बारे So में now बात कर रहे let's go on to floor Okay. 80 Isil. Isil is an assassin basically with 2 main stages. In the first stage, she mainly uses हैं। भाई 2 स्टेज रहेगी, मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। laser beams from drones that she can spawn, and लेजर बीम मारेगी और ड्रोन्स से अटैक वटैक करने sword वाली है। attacks. She dashes around a lot, so again you Okay. need to use
to use a lot of dashes. She does special attack after you. ये अगर आपको याद आ रहा है तो ये वैसा नहीं लग रहा है वो जो हम चैप्टर 10 पे जो बॉस करते हैं भालू वाला, वो जब एक फेज़ में जाता है तो आस-पास अपने क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लेता है, फिर वो हमको सारे क्रिस्टल्स तोड़ने पड़ते हैं। Lower her HP उस टाइप enough, का कुछ डाला है यहाँ which पे then वो। she charges into the sky and does the famous sun animation that you guys saw in the new तो वो उठा के एसिल की Baran फाइट में डाल teaser दिया है। video that they did a ओके, while देखो back. लेज़र मार रही है। ओके, लेज़र ये इससे ये समझ आया कि लेज़र ये एक जिस डायरेक्शन में मारती है उसी डायरेक्शन में मारती है, उसको घुमा नहीं सकती, जैसे सर्बरिस अपने लेज़र को घुमाता है उस So तरीके से। basically, after she does that, she starts bombarding the entire area ओह! with व्हाट ये क्या चीज़ है भाई? abilities, and you have to dodge all of them. And then she goes back down. After you break her again, she then goes into a crouched state and starts shooting everywhere in a circular area. And she creates crystals और हाँ, यहाँ पे देखो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे डार्क एलिमेंट और विंड एलिमेंट रिकमेंडेड रहने वाला है, तो भाई उस हिसाब से अपना सामान लेके जाने हैं। लेकिन गाइज़ ये पूरी जो चीज़ें हैं, ये सब एकदम कन्फर्म नहीं है। देखो लीक्स हैं, तो चेंज हो सकती है, ठीक है? तो around पूरे herself. तरीके से लेना, You have to destroy those एकदम crystals in 100% order to श्योरिटी कुछ break नहीं her, है। and ये then you सेकंड will be फेज़ में able to गई है आई finish the गेस। stage. It is a very annoying stage again because you have to use a lot of dashes, but it is fun. I have to say, ओके, in this mode, in this general like workshop of Brilliant Light तो भाई ये यहाँ पे तो हमको they डॉज decided to करना go है, in the ओके, direction of doing a lot of abilities and gimmicks that you have to dodge. ओके। Kaisel काइज़ल के बारे is में बात कर रहे हैं अब the हम। dragon, the wyvern that Baron rides, if you don't know that. His main attack pattern is Baron riding on him, and then they do a teleport to the left side of the screen, and when he does a wing attack on you, you have to ओके, dodge भाई the ये second लेज़र बीम मार रहा है और लेज़र बीम के साथ that में you ही see the अपना teleport डायरेक्शन happening. भी चेंज कर रहा है। ये भी And 360 then कर रहा he है, देख does रहे हो? mainly light beam attacks and lightning storms. ओके, Pretty आ usual गया भाई, stuff, to be ओके। honest. Not something that I can warn about that you have to dodge. The main gimmick of this stage यहाँ पर स्टेज में देखो एक तरीके से यहाँ पे लाइटनिंग का पूरा वो बिछा दिया है, जैसे पॉइज़न वॉइज़न की स्टेजेस आती है उस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप स्टेप is the करोगे तो fact आपको that when डैमेज you होगा, lower मुझे his जितना लग HP रहा है। enough, similar to other stages, he goes into a spatial stage where he and Baron starts absorbing all of the energy around the area. ओके, तो ये और बैरन एक स्टेज में चले जाएँगे, जब एचपी कम हो जाएगी, तो आस-पास की सारी When they एनर्जी do that, अब्ज़ॉर्ब you have करेंगे to ये। start collecting all of the energy orbs that तो हमको एनर्जी ऑर्ब जो भी रहेंगे वो appear कलेक्ट करने before पड़ेंगे। they do, because if you don't, they're gonna do a huge attack and basically almost one-shot you. और उनके मतलब यहाँ पे एक तरीके से भाई गेम हो रहा है कि वो कलेक्ट जल्दी करेंगे या हम कलेक्ट जल्दी करेंगे, And if you काइंड ऑफ। do manage to get all of them, ओके, it breaks the characters and then you can finish the fight. It's a quick fight, to be honest, in my opinion, unless they buffed it before release. But yeah, now we can go on to the main stage that everyone is interested ओके। in, which is मेन floor स्टेज के बारे में अब 100. हम बात करने Floor वाले हैं। 100 is a very, very gimmicky floor, I have to say. फाइनल I स्टेज think और they यहाँ पे might have बैरन से overdone फाइट it, होगी। but still fun. 400 Similar to Vulcan, he also has multiple stages. In the ओके, first stage, he mainly uses a sword and lightning attacks. He dashes around you and starts doing lightning attacks, AoEs around the map. You have to dodge all of them perfectly. भाई लेकिन Again, क्या ही some of सिक them लग are रहा है यार easier ये to वाला। dodge. And then he does the main special gimmick of the first stage, which means he starts going, he teleports into the back of the stage, and व्हाट when he भाई ये कैसा अटैक है? starts ओके, falling क्रेजी he चीज़ है भाई starts ये तो। going, he teleports into the back of the stage, and when ओके, he starts throwing walls of lightning onto तो you. भाई ये Now, what टेलीपोर्ट do हो I mean जाएगा, by that? तो ओके, ओके, तो हम यहाँ पे उसको शैडो स्टेप कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि वो एक पीछे चले जाएगा मैप पे और वहाँ से ये ऐसी दीवार फेंकेगा, लाइटनिंग वाली। You can imagine walls flying onto you, and they तो have भाई ये वाली जो आने वाली जो स्टेजेस है भाई, यहाँ पे डैश बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब आप देख लो भाई, मुझे लग रहा है फाइनली ब्लेसिंग स्टोन स्विफ्टनेस यूज़ आने लगेगा, साथ में हम जिनचुल को भी यूज़ करना पड़ेगा डैश के लिए ऑब्वियसली।
तो देखते हैं। certain like areas where you can pass through them, which means you have to start dashing around the walls to get into the opening in the mazes to be able to dash ओके, यहाँ through पे them वो and go बिजली through them. कड़का रहा है Of नीचे course ज़मीन पे, देख रहे हैं। you can dash to dodge the wall भाई itself, डीमन किंग है कि थॉर but है ये? again you're gonna waste a lot of dodges and you have to time it perfectly. So I would recommend when he starts doing this stage, go to the furthest part away from him and then ओके, manage to just walk between the gaps in the walls. And yeah, after you do that, he goes into a giant mode similar to Vulcan, and he starts भाई ये भी जायंट मोड में जाएगा, वल्कन जैसे जाता है उस तरीके से। slashing the sword around the map. You have to dodge it. और स्लैशेस मारेगा तलवार के पूरे मैप पे, हमको उससे बचना पड़ेगा। It's pretty easy to dodge. And then he देखते does हैं। the insta kill thing ओके, where you have to ये go देखो, into ये बड़ा हो गया और यहाँ पे स्लैशेस मारेगा। अब इसको a डॉज safe कैसे area. The करेंगे? safe area this time is actually Isil, ओके, which appears on the map and does a shield कूल, around ओके। that area. And you have to dash और मारना quickly into भाई। that area to be able to ओके, ओके, ओके। तो जैसे वल्कन का हमको यहाँ पे सेफ एरिया आता था, तो वहाँ वैसे ही यहाँ पे भी सेफ एरिया है। survive the one shot यहाँ पे attack. हमको नहीं लगेगा। And ओके, this ये देख was सकते only हो। the first stage. The second stage is when you kill him, actually dropping to 0 HP. He comes to life again. This ओह! तो यहाँ पे ये पता है, इसको अगर आप पूरा खत्म कर दोगे, इसकी एचपी 0 कर दोगे, तो उसके बाद में भी ये ज़िंदा हो जाएगा time वापस। with daggers. Now you're wondering probably what it means. Basically, he now goes into stealth a lot. He dashes a lot onto you, so again, dashes are gonna be needed for this extension. Like ओके, तो भाई वो एक तरीके से असासिन मोड में चला जाएगा, स्टेल्थ मोड में चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डैश वगैरह करेगा, तो हमको भी डैश वैश करने पड़ेंगे काफ़ी सारा, ये अल्फ़ा भाई बता रहे हैं यहाँ पे। very much. I can see people using Wujin Chul a lot, especially for the extra देखा, dash. वो जिनचुल यूज़ कर रहे हैं। ओके, So basically, he यहाँ पे teleports लेज़र around a मार रहा lot, है फिर and से। then the special gimmicks in this टेलीपोर्ट stage वगैरह भी is करेगा। similar to the Dark Assassin, the SR one, where you fight in story, and he does like the multiple teleports around you, and then you have to time the dodge perfectly to dodge it. He does the same exact attack multiple times, so this is gonna be hard for a lot of players because this does a ton of damage. It's probably gonna one-shot you, but I still think you guys will enjoy it. It goes into a berserk stage after that and starts doing lightning abilities that are aimed exactly at you, that actually follow your movement and stuff like that. And yeah, after you kill him now, you finish the fight itself. ओके, So तो yeah guys, सेकंड this टाइम was a में ये rundown फाइल of the होगी ख़त्म। तो गाइज़ क्रेज़ी ही कुछ तो अपडेट आया है, मतलब आने वाला है गाइज़। तो मुझे बताओ किस-किस को इंतज़ार है भाई ये अपडेट का? मज़ाक से हट के गाइज़। भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ खतरनाक वाला। फाइनली कुछ और ही खतरनाक चीज़ लेके आ रहे हो और इस बार थोड़े कुछ-कुछ नए-नए मैकेनिक्स वगैरह भी लेके आए। तो देखते हैं क्या-क्या होने वाला है, कैसे-कैसे होगा। अभी तो ख़ैर ये दोनों का बैनर चल रहा है और आपको पता ही है कौन आने वाला है नेक्स्ट में, ठीक है? तो बस यार यही था एक छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा बताओ? अगर पसंद आया तो डेफ़िनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए मित्रों ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का और बाय, बाय।